So very good afternoon to all and welcome all to today's session. Just type yes on the chat box अगर मेरी voice सबको clear है and screen visible है. Just take हम लोग 30 seconds and we'll just halt and take the confirmation from everyone कि अगर मेरा voice audible है and screen visible है सबको. So those who are attending this session from our YouTube channel, they can type in the this live chat section कि our voice is audible, and those who are attending from WebEx channel, they can they can see on the bottom right corner that वहाँ पे एक chat का section है and you can just type the yes, our voice is audible to you all. Thank you so much for the confirmation. So let's begin the session. My name is Rohit and I'll be your co-host for this session, and I'm having with me Mr. Karan Pai, who will be the host for this session and walking you through about the technical analysis. So there are the important patterns are there in the candlesticks. So candlesticks में हमेशा एक different patterns form होता है where you have to figure it out कि that okay यहाँ से bullish reversal आएगा या यहाँ से bearish reversal आएगा, or it will be in the sideways trend. Now, as a technical analyst, Karan Pai is Karan Pai is the CMT holder, and he is a master. I would say like master in the technical analysis, and he understands like how the charts and patterns works, and he'll be giving you the detailed explanation about the five concepts what we have released this week. That is on the means on the patterns that on the candlesticks what we have covered. So now with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you now. गुड आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू सो मच रोहित फॉर दैट इंट्रोडक्शन. एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि टेक्निकल्स में मास्टर्स कोई नहीं होता है, सो यू कीप ऑन लर्निंग. जैसे जैसे आप ज़्यादा चार्ट्स पढ़ते हो चीज़ें आपके लिए थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है. आप कैंडल पैटर्न्स को बेटर समझ पाते हो. पर्टिकुलर प्राइस जो है पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं एंड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. सो हम लोगों ने नाउ ये जो पूरा टेक्निकल का जो सीरीज है हम लोगों ने मल्टीपल पीसेस में उसे डिवाइड किया है. सो सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि वी स्टार्टेड ऑफ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, एंड चार्ट्स में हम लोगों ने लाइन चार्ट्स देखे, बार चार्ट्स देखे, कैंडल चार्ट्स देखे, तीनों के कंपैरिजन देखे, एंड स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये भी मेंशन किया था कि हम लोग कैंडल स्टिक्स इतना रिलीजियसली क्यों फॉलो करते हैं. सो एज अ क्विक रिकैप मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो जो भी चार्ट्स आप देखते हो उसमें आपको डेटा पॉइंट्स मिलते हैं. सो लाइन चार्ट्स में अगर आप देखो तो क्लोज टू क्लोज चार्ट प्लॉट होता है, एंड देन सिंपल लाइन जस्ट यू गेट अ लाइन. सो दैट इज हाउ यू प्लॉट अ लाइन चार्ट. बार चार्ट में आपको चार डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज बेसिकली ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. OHLC डेटा बोलते हैं उसे. एंड कैंडल स्टिक्स में भी आपको चार डेटा पॉइंट मिलते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड कैंडल स्टिक चार्ट्स, जैसे आप देख सकते हो, कैंडल स्टिक चार्ट्स दे आर अ बिट मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज उसका रिप्रेजेंटेशन जो है थोड़ा ग्राफिकल है. देखने समझने में थोड़ी आसानी होती है. अभी कैंडल स्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो बुलिश कैंडल्स है वो यहाँ पर मेरे चार्ट पर इट इज़ वाइट, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो इट इज़ ग्रीन. एंड नेगेटिव कैंडल्स जो हैं दे आर रेड, जनरली रेड, बट मेरे चार्ट पर अगर आप देखोगे इट इज़ ब्लैक. सो हम लोगों ने सिंगल कैंडल पैटर्न्स देखे थे. सिंगल कैंडल पैटर्न्स में वी गेट टू नो कि एक पर्टिकुलर डे पर पार्टिसिपेंट्स का क्या व्यू था. सो हो सकता है कि देर माइट बी डेज जब जो बुल्स एंड बेयर्स है वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड एट वन पॉइंट बोथ ऑफ देम काइंड ऑफ गिव अप, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक अ डोजी. एंड हो सकता है कि और हैव समथिंग लाइक अ डोजी. एंड हो सकता है कि अर्लियर सेशन में देयर वर द बेयर्स वर टेकिंग कंट्रोल एंड देन द बुल्स टुक ओवर.
एंड जो टेक ओवर था वो काफ़ी मैसिव था एंड यू हैड अ पॉजिटिव क्लोज. सो वी अगर ये ट्रेंड के एंड पर आ रहा है देन इट इज कॉल्ड अ हैमर पैटर्न. एंड वहीं पर यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ शूटिंग स्टार, मतलब अ सेशन वेयर वी सीन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड. एंड एक ऐसे पॉइंट आता है वेयर द bulls they try to book profits, and the bears add to it by initiating shorts. सो वहाँ पर इट इज़ अ नेगेटिव कैंडल पैटर्न. एंड अगर आपको ये सारे कैंडल पैटर्न्स के बारे में जानना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज वीकेंड आ रहा है. इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग यू कैन क्विकली टेक अ लुक एट आवर वीडियोस, एंड ये जितने भी वीडियोस हैं you can watch it at 2x or 1.5x speed. It will not take more than 15 minutes for you all to brush up the knowledge, brush up whatever we were trying to convey. Now before going ahead, मैं आपको निफ्टी में क्या हुआ है ये हफ्ते में आपको बताना चाहता हूँ. सो ये वीक जो था वो चालू हुआ था ऑन द 23rd, एंड 25th को ऑब्वियसली क्रिसमस की वजह से हॉलीडे थी. वी हैड हॉलीडे. एंड इफ यू सी ये हफ्ते में 4 टोटल ट्रेडिंग डेज थे. एंड इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है. इट्स अ सिंगल कैंडल पैटर्न. एंड जो मैसेज जो है मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग या क्लियर रहा है. सो इन द चैट बॉक्स अगर कोई मुझे बोल सके कि पिछले 3 या 4 सेशंस का अगर मुझे एक समरी लेना है तो हाउ वुड आई एज अ ट्रेडर लुकिंग ओनली एट द कैंडल पैटर्न्स इंटरप्रेट व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल मी. विल हॉल्ट फॉर अ मिनट और सो. एंड इतने में अगर आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाला तो it will be well and good because I want it to be a dialogue and not a monologue. So ये 3 या ये 4 कैंडल्स को देखकर आपको क्या लगता है? There is a very specific information that the market is trying to give you. Okay, so looks like everybody is still in the Christmas mood. So ये पिछले 3 दिन का अगर मैं पैटर्न देखूं, सो रियल बॉडी अगर आप देखोगे, रियल बॉडी इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज एंड द ओपन. रियल बॉडी अगर आप देखोगे तो कैंडल साइज जो है वो काफ़ी छोटे हैं, बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल कैंडल इसमें विक्स ऊपर के या नीचे की तरफ बहुत बड़े बड़े हैं. So what does this signify is basically bulls and bears, they are trying to take control, but because जैसे आपको पता है कि FIIs at this point of time are out of the market, and they are not back till at least 2nd of Jan. Correct. So ये phase जो है थोड़ा low volatility का है, and this is exactly what we are able to see here. So both of them squared off the position, and market जो है अगर आप इसका gain देशन, एंड मार्केट जो है अगर आप इसका गेन देखोगे तो तकरीबन ऑफ कोर्स दिस इज अलोंग विद द गैप्स. सो -0.1, -0.1, एंड आज के दिन का भी अगर आप गेन देखोगे तो इट इज 0.4, बट दैट इज इंक्लूडिंग द गैप. बट ओवरऑल क्लोज टू ओपन टू क्लोज अगर आप देखोगे तो चेंज जो है काफ़ी नेग्लिजिबल होता है. सो मतलब देर आर पार्टिसिपेंट्स बट देन नोबडी इज कॉन्फिडेंट इनफ टू कैरी द पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे और द कमिंग वीक. सो बेसिकली जितने भी लोग हैं उन लोग स्क्वायर ऑफ करके चले जा रहे हैं. So now we'll focus on the candle patterns that we had discussed. And last हमारे सेशन में हम लोगों ने सिंगल कैंडल पैटर्न्स डिस्कस किए थे. वी स्पोक अबाउट हैमर, वी स्पोक अबाउट शूटिंग स्टार, वी स्पोक अबाउट डोजी, एंड नाउ वी ऑल्सो एक्चुअली कवर्ड मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स. सो मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स में बेसिकली 2 कैंडल पैटर्न्स थे जो एनगल्फिंग पैटर्न्स थे हमारे, जो हरामी पैटर्न्स थे वो हम लोगों ने कवर किया था. एंड देन दिस वीक वी हैड 3 कैंडल पैटर्न्स. सो 3 कैंडल पैटर्न्स एज इन अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पढ़ा रहेगा, या इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, आपने देखा होगा कि ये ऐसे कैंडल पैटर्न्स है जहां पर 3 दिन का आपको प्राइस डेटा चाहिए होता है. नाउ देयर इज अ क्लासिक एग्जांपल जो आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है, दैट इज ऑन 3 ब्लैक क्रोस. एंड 3 ब्लैक क्रोस की अगर मैं बात करूं तो इसका एक बिफोर दिस पैटर्न इज फॉर्म, जो इसका प्रीवियस ट्रेंड होता है वो बुलिश होता है. एंड साइकोलॉजी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल ये मूव में अगर कैप्चर करूं, ठीक है, the index went from as low as 23,263 all the way up to 24,792,
एंड देन वहां से देयर वर 3 कंटिन्यूअस नेगेटिव डेज. अभी इसका रीजन बहुत मल्टीपल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन ऑन द 16th of December we had a first negative candle, negative close with respect to its open or even the previous close. सो ये बताता है कि प्रॉबली जो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा था वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है एट दिस पॉइंट. एंड देन द नेक्स्ट डे अगेन, बिकॉज ऑफ इट कुड बी एनी रीजन, बट देन कैंडल पैटर्न्स दे ओनली. बट नेक्स्ट डे का अगर आप देखोगे, नेगेटिव सेंटिमेंट जो ये 60 एंड वी हैड अ गैप डाउन ओपन. गैप डाउन ओपन के साथ साथ अगर आप देखोगे उसका क्लोज भी उस दिन नेगेटिव ही था. सो दिस बेसिकली टेल्स दैट कि कल जो एग्जॉशन हम लोग को बुल्स की तरफ से दिखा था वो शायद आज कंटिन्यू हो रहा है. द बेयर्स आर टेकिंग ओवर एंड द थर्ड डे इज अनदर नेगेटिव डे. सो अनदर नेगेटिव डे जब मैं बोलूँ तो इट इज बेसिकली कंफर्मिंग दैट द बेयर्स आर स्टिल इन कंट्रोल. सो एंड इन तीनों कैंडल पैटर्न्स को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो इट इज बेसिकली लाइक एक कांस्टेंट अप मूव रहा है ऑल द वे फ्रॉम 21st टू द 13th. अभी ये बीच का जो कंसोलिडेशन है इसमें इसे आई कैन कंप्लीटली ये बीच का जो कंसोलिडेशन है इसमें इसे आई कैन कंप्लीटली चूज टू इग्नोर. नाउ द रीजन बीइंग कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं था उसमें. देयर वाज अ ड्रिफ्ट ऑन द डाउन साइड सर्टेनली, बट देन अगेन इट इज थिंग्स आर गोइंग. एंड देन अनदर कैंडल पैटर्न. नाउ इसका ना मैं आपको थोड़ा डिटेल देना चाहूंगा. सो लेट मी जस्ट quickly open the fold. Yeah, the fold. सो मॉर्निंग स्टार कैंडल, बहुत लोगों को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न में काफी कंफ्यूजन होता है. सो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न इज बेसिकली अ काइंड ऑफ 3 कैंडल पैटर्न which is formed at the bottom. Now the way I remembered this during my early days is morning is when the sun rises. So morning star जब मैं बोलूँ तो it is basically the start of a trend. So जैसे morning आपका it is the start of the day, morning star candle pattern जो है it is basically a start of the trend. So इसे example में अगर मुझे करना है basically a start of the trend. So इसे example में अगर मुझे करना है then I would say this. सो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लेकर, मतलब कंसिस्टेंट डाउन मूव्स है, कंसिस्टेंट एंटर एंड दे हैव टू एंटर बिग टाइम. सो दैट इज व्हेन यू सी अ गैप एंटर एंड दे हैव टू एंटर बिग टाइम. सो दैट इज व्हेन यू सी अ गैप अप ओपन एंड गैप अप के बाद द बेयर्स नीड होल्ड ऑन टू देयर पोजीशंस टिल द एंड ऑफ द डे. That is why you see a green candle. So this 3 candle pattern is called as a morning star pattern. Now I'll take a halt for a second and morning star pattern में अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, या अभी तक जितने भी कैंडल पैटर्न्स हम लोगों ने देखे हैं समझे हैं उसमें अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो प्लीज एट दिस पॉइंट यू कैन गो अहेड. We'll halt for a minute or two and then we'll continue. Karan, we are having one query from our WebEx channel. That's how can we see the explain किया है, उसका exact opposite is basically 3 white soldiers. So 3 white soldiers I'll be covering. अभी हम लोगों ने morning star किया है, I'll be going through evening star and then the 3 white soldiers. मॉर्निंग स्टार सबको क्लियर है. नाउ व्हाई डू आई कीप आस्किंग यू कि क्लैरिटी है, बिकॉज इसका एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको बोला कि मॉर्निंग स्टार हाउ आई रिमेंबर इज बेसिकली मॉर्निंग एंड द सन राइजिंग एंड द स्टार्ट ऑफ द डे. इवनिंग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. दैट इज व्हेन द सन इज सेटिंग द डेज. एन इवनिंग स्टार पैटर्न ऑकर्स व्हेन द अप ट्रेंड इज कमिंग टू एन एंड. सो इसका एग्जैक्ट उल्टा सिनेरियो आप देख सकते हो. सो आई विल अगेन गो टू द स्केच द पेंट एंड then consider this again. एक particular कोई stock है because of any XYZ reasons. Now one thing when it comes to technicals is we don't dwell too much on the reasons as to why a particular price is going up. So I had this discussion at one of the meetings that I was hosting and वहाँ पर ये query आई थी कि अगर एक candle pattern बन रहा है तो उसके पीछे का logic क्या है. So एक चीज़ मैं बहुत clear करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग टेक्निकली आर हियर टू रिएक्ट और इवन प्रोएक्ट, नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हैज हैपेंड. अगर आपको टेक्निकली कोई लेवल दिख रहा है जो ब्रीच हो रहा है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब बैकग्राउंड में ऑलरेडी कुछ हो गया है.
वो आपको समझना नहीं। अभी ना I'll put it to you this way. For example, you purchase a car to go from your home to your office. सो जब भी आप गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए आप उसको ड्राइव में डालते हो, फर्स्ट गियर में डालते हो, एक्सीलरेटर मारते हो, यू डोंट नीड टू लिटरली विजुअलाइज कि मैं पेट्रोल पीछे डालता हूँ, गाड़ी आगे जा रही है एंड ऑल दोस थिंग्स। वो आपको समझना नहीं है, आपको बस समझना है कि गाड़ी आपको चलानी है, कैसे चलानी है, क्या मारोगे तो गाड़ी आगे जाएगी, क्या मारोगे तो गाड़ी रुकेगी। दैट्स इट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच टेक्निकल्स। सो यहाँ पर जब भी हम लोग इवनिंग स्टार की बात करें, देन दिस इज बेसिकली अ कंसिस्टेंट अप ट्रेंड। अगेन, नॉट ड्वेलिंग ऑन द रीजन एज टू व्हाई अ पर्टिकुलर स्टॉक हैज गॉन अप, बट ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के बाद यू सी अ गैप अप ओपन, मतलब बुलिश मोमेंट। अर्ली जो मॉर्निंग जितने भी लोग मार्केट ट्रैक करें तो उन लोगों को लगेगा कि द बुलिश मोमेंटम इज गोइंग टू कंटिन्यू, and then because of any xyz reason, the either the bulls have booked their profits or the bears have come in strong, jiske wajah se the bulls got squeezed out, whatever it could be anything, and then you would see something like this. So मतलब मार्केट गैप अप के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, either the bulls squared off their long because they were satisfied with the profit, or the bears came in because they thought that this is a good price to go short, and then you see the prices coming down, and एक थोड़े मतलब compared to the gains that we had earlier that day, it will close at a slightly lower, not slightly lower price, it will close at a decently lower price, and then you will have a upper wick. Now when I'm talking about this, it need not be a shooting star, it could also be a doji. Basically indecision बताना है वहां पे कि मतलब जो ट्रेंड चल रहा था कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहा है, and then नेक्स्ट डे बिकॉज देर इज इनफ प्रॉफिट बुकिंग बहुत लोगों के नोटिस में आ जाएगा, एंड देन यू माइट सी अ गैप डाउन ओपन, जस्ट अ मिनट, yeah, and then you might have something like a gap down open, and जैसे morning star में the bulls kept control till the end of the day, यहाँ पर the bears will keep control till the end of the day. यहाँ पर bulls का कोई लेना देना नहीं है because it opened on a negative note and then it ended on a negative note. It gapped down and it ended on a negative note. मतलब bears ने control लिया and they held on to that control till the end of the day. So that is how an evening star is formed. नाउ समिंग इट अप इन वेरी सिंपल टर्म्स, एकदम आपको लेमैन लैंग्वेज में अगर याद रखना है, मॉर्निंग आपको याद रखना है कि इज द स्टार्ट ऑफ द डे, कंसिडर डे एज द स्टार्ट ऑफ योर अप ट्रेंड, एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म्स whenever the uptrend starts, and evening star, evening is basically the end of the day, and it's at least showing that it is the end of the day, and that is when the sun sets. So आपका जो bullish momentum है exhaust होते हुए यहाँ पर दिखाई देगा, and then the prices will fall down. यहाँ तक अगर किसी को कुछ query है, कुछ पूछना है, now would be the right time. So if you have any queries, anything, then you can put in the chat box, or we'll move further with the three black rows that will be released today. And also in the chat box, let me know if the pace is good. आपको slow चाहिए थोड़ा, आपको fast चाहिए, language ठीक है. Please make it interactive. Because silence means one thing, या तो फिर आपको सब कुछ आता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है. Okay, I'll like to run a quick poll, and because I think Rohit, we've been doing this for a month or so, or more than a month, the concept of the day. So I just want to know from you people कि आप लोगों को ये कितना helpful रहा है, आप लोगों को किस हद तक हमारे जो concepts है explain करने का जो तरीका है वो किस तरह से आपको useful रहा है, has it been helpful or not, वो भी बता दीजिए. And अगर आपको कुछ changes चाहिए from our end in the reports that we publish, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay, looks like सब लोग अर्ली क्रिसमस मना रहे हैं, अर्ली न्यू ईयर मना रहे हैं. I hope you guys are responsible enough.
So let's go on with our next concept, which was basically the three white soldiers. सो थ्री, जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार देखा, सो सेम जैसे एक दूसरे के बेसिकली अपोजिट थे. So same thing happens with a three white soldier and three black crows. So three white soldiers. The name soldiers is because a soldier tends to march ahead, and three white because it's a bullish move, so it can either be red or white. So consider this scenario, जहाँ पे I'll just remove everything. या कंसिडर दिस सिनेरियो जहां पे एक पर्टिकुलर आपका स्टॉक है, लेट्स से एचडीएफसी बैंक या लेट्स से एनी स्टॉक फॉर दैट मैटर, because of XYZ reason has been falling down continuously. And जो कैंडल साइजेस थे, दैट डज नॉट मैटर, इट कुड ऑल्सो बी 2 दिन काफ़ी गिरा एंड देन इट कंसोलिडेटेड फॉर अ वाइल एंड देन इट फाइनली कंटिन्यूड टू फॉल even further. Correct. So ऐसे situation में one might think that the bears are in control, and they're absolutely right, because the trend clearly says that the prices are moving lower, and whenever the prices are moving lower, it is the bears that are in control. But then one fine day you see a candle pattern which kind of is opposite of what has been happening. मतलब ये कंसिस्टेंटली आपका डाउन मूव में था, एंड देन मतलब ये कैंडल्स जो थे आपके रेड थे या ब्लैक थे, एंड देन वन फाइन डे आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाता है. सो मार्केट मतलब साइकोलॉजी क्या बोलेगी कि पीपल हु हैव गॉन शॉर्ट एट दिस पॉइंट are probably satisfied with the kind of profit that they're making at this point. I think that is a reasonable argument. So the bears who were short at this point, उन लोग probably अपनी position square off कर रहे हैं. So जब ये एक सेल पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ करोगे, आप बाई करोगे, तो प्राइसेस दे टेंड टू मूव हायर, and that is what has happened here. And then because the prices are moving higher, the bulls also will take notice. So क्या होता है कि एक होता है कि आपके bears जो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं उसकी वजह से there is buying interest, and then because the bulls are taking notice कि ये bears जो है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब it could be a possible support level, bulls they enter. So उन लोग अपना लॉन्ग पोजीशन स्पेशली बिल्डअप करते हैं, and that is when unfortunately next week's prediction is way beyond the purview of this webinar. उसके लिए अगर आप हमारे टेक्निकल टीम्स के कॉल्स अगर आप फॉलो करोगे, तो कॉल्स एंड रिपोर्ट्स अगर आप फॉलो करोगे, तो वो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू एजुकेट यू, and we are basically running a motor training school, not a cab service. So basically हम लोग आपको सिखाएंगे कि एनालाइज कैसे करना है मार्केट को, समझना कैसे मार्केट को, एंड हम लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ये करो वो करो. So this is basically a part of our educational series. So yeah, coming back to the topic, continuous downtrend with our market, and then one fine day the bulls have taken over, the bears have squared off because of any XYZ reason, the stock price था वो reverse हो गया. So this is basically the first sign that the bearish move or the bearish momentum that we had been seeing for quite a while has probably halted. अभी halt होने के बाद, for the bulls to gain more control, you need a follow through. Now it could either be another positive day opening in the previous candles range, or it could be a gap up open, जैसे भी हो सकता है, but then it will be a second day wherein the bulls came in and they controlled the entire move till the end of the day. मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आपको एक हिंट मिल जाता है कि जो प्रिवेलिंग बेरिश ट्रेंड है दैट इज कमिंग टू अ हॉल्ट. सेकेंड डे द बुल्स आर टेकिंग ओवर कंप्लीटली, एंड देन देयर इज थर्ड डे विच बेसिकली कंफर्म्स दैट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ चुका है. एंड नॉर्मली जब ये थर्ड कैंडल फॉर्म होता है, यू माइट सी गुड रेजिस्टेंस लेवल्स बीइंग टेकन आउट. या फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर जो चार्ट, हाइपोथेटिकल चार्ट जो मैंने बनाया है, उसमें आप अगर देख सकते हो कि ये 3-4 दिनों का तकरीबन सेम हाई आ रहा था या लो आ रहा था. सो ये जो लेवल होता है वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वो निकल गया है. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी crude situation, a very crude explanation, and not something that I personally would follow. But again मैं आपको एक hypothetical situation create करके बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको जहाँ पर आप identify कर सकते हो कि अगर ये particular candle pattern है and I'm seeing that a particular resistance is being breached, then there is a probable halt in the down move. या जो regime है वो change हो रहा है, that is going from the bears to the bulls. So this is basically three white soldiers. Now quickly summing up, three white soldiers. The soldiers, they tend to march ahead, so that is why it is called a three white soldier pattern. And because it's a bullish candle, it can either be a green candle or a white candle. So white soldiers, three white soldiers.
three black crows. So again, from what I have heard now, this is very arguable. Ki crows, they tend to come down to catch the prey. So that is why jo bearish candles ban rahe, because the prices are coming down. The assumption is that I mean, the analogy is basically a crow coming down to catch the prey or food, whatever it is. And that is why it is called a three black crow pattern. And then we touched upon morning star and evening star candle patterns. Again, morning star, morning, आपको ये एक बात याद रखनी है. This is the time when the sun rises. It's the start of a day. So basically, whenever it's a start of an uptrend, so ये मुझे explain करने की जरूरत नहीं है. The day comes after night. So after a downtrend, when you are starting an uptrend, that is when the sun rises. That is when you see a morning star pattern. And similarly, when there is a continued uptrend and ऊपर आप exhaustion देख रहे हो, that probably signifies that your day is probably coming to an end, and that is when an evening star pattern is formed. So this is basically the concept of the day that we had published during the week. And इसके अलावा अगर आपको कुछ predictions छोड़ के, कोई stock specific छोड़ के, अगर आपको कुछ technicals के बारे में पूछना है, then we are open for Q&A. So, Karan, I think one of our student was having the query about the next week prediction. So we can tell about the support and resistance. That support and resistance of the Nifty 50 as this like the next week will be the I believe that will be the first week expiry. Next year will be the first week expiry of this Nifty 50. That will be on the 2nd of January. So if you can just showcase about the support and resistance part. ठीक है. So I'll only talk about the index. एंड जैसे मैंने आपको बोला कि ये वीक जो था वो काफ़ी एक ठंडा वीक रहा है. एंड probably till the second we might see this sort of scenario continue. Now I'm telling probably till the second because historically that is what has happened. So whenever the FIIs they go on vacation, they start around the Christmas Eve, and जो उन लोग का holiday season है that goes all the way up to the second till the new year. Yeah, and it goes all the way till the new year. So आने वाले वीक में भी going by what history tells us, we might not see much volatility is what I'm assuming. But then again, if there are any fresh geopolitical tensions or any new year surprises, then we might see volatility expand. Now, just going by technicals, the immediate resistance zone that I would be seeing is somewhere around 24,100 to 24,150. Now, the reason being, यहाँ पर एक gap area है जो अभी तक fill up नहीं हुआ है. I would say that 3 times there has been an attempt to fill this gap, but then again वो gap level जो है वो fill नहीं हो रहा है, and for good reasons. If you see the chart, थोड़ा अगर आप daily chart पर अगर zoom out करोगे तो multiple touch point levels हैं which have acted as support earlier. So जो एक water level होता है, मतलब a particular level that has acted as support earlier is expected to act as a resistance when the prices break below the support and attempt to go higher. So basically यहाँ ये पूरे zone में आप देख सकते हो कि around 24,100 there has been support. And now that the prices are below 24,100, ऊपर जाते टाइम भी 24,100 पे थोड़ा हम लोग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ टू ऐड टू इट 24,000 इज अ राउंड फिगर, सो वो भी एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल बनकर आ सकता है. सो जो जोन है 24,100 24,150 का, दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो जो रिसेंट स्विंग लो है, दैट इज जो 20 तारीख का जो लो था, which is 23,537, that could act as a support because swing low के पास है, that's the most recent low. यहाँ पर मैं ज़्यादा emphasize नहीं करूँगा on this level because of course अगर आपने हमारे flash reports वगैरह पढ़े होंगे तो you might have seen 3 pitchforks coming at the same point. Now if you want to read more about what is happening in the Nifty, then you can go to our LinkedIn handle. You can go to our you can go to our LinkedIn handle. वहाँ पर आप ये post देखोगे जहाँ पे we have shown how the multiple pitchfork support levels are coming together and acting as a support for the index. So just go through that detail में आप उसे देख सकते हो. And pitchfork is not something that we'll be covering immediately, but certainly in the pipeline. But for the time being मैं आपको इतना बोलूँगा कि जो recent low था काफ़ी crucial level था when you look at technical indicators like a pitchfork or something like that.
सो वो ब्रीच करना थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करेगा इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. एंड देन उसके बाद अगर यू सी अ डाउन मूव, the next support level could be around 23,300 which was a previous swing low जो हम लोगों ने नवंबर में देखा था. And I don't see any major negative triggers as of now that could push the prices below that. Again on the upside, अगर आप 24,150 को अगर breach होते हुए देखोगे तो probably 24,500. We're not going to dig deep too much into what the OI data is telling. We'll take one step at a time, go with the flow, and as in how levels are breached, as in how things pan out, we'll look at confirming the trend. We'll look at further levels. Again, on this Monday, that is next week, we'll be covering on the market outlook and the index expiry strategy. So today's session was much more focused on the technical analysis. Yeah, so we'll open up the floor for Q&A. We'll open up the floor for Q&A and we'll be here for another 2 minutes. अगर आपको कुछ query है, कुछ पूछना है, then this would be the right time. So also one more thing that I would like to point out here is I understand that currency segment जो है वो retailer के लिए बंद हो चुका है, but then आप USD INR में काफी अच्छे movements देख सकते हो. And if you are curious about what is happening in the dollar rupee pair, then again आज हमारा एक social media post आया है जहाँ पर where we have tried to explain what are the factors that are pushing the rupee lower. मतलब what is helping the dollar strengthen against the rupee. So that is another interesting insight that you would find on our LinkedIn handle. So thank you so much, Karan, for such a great insight, and thank you for covering in detail about all the conceptual part that we have published this week. So we'll see you on this Monday. That will be we'll be covering the topic that is market outlook, and then on Thursday we'll be taking on the live market hours that will be on the Nifty 50 weekly expiry, and again on Friday we'll be touching the base on this technical analysis. So once again, thank you everyone for taking out the time, and wish you a very Merry Christmas and a very Happy New Year. Thank you once again, and thank you all.